हेलो आदाब नमस्ते। इंडिया बिजनेस लेजेंड्स पर आज हम मिलने आए हैं प्रियंका काम्बोज से। प्रियंका काम्बोज जिन्होंने एक वेडिंग फोटोग्राफर की तरह शुरुआत की और उसके बाद आज ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस खूबसूरत कैफे की मालिक भी हैं। प्रियंका, हेलो, वेलकम। थैंक यू। एंड जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स, एक बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना एक बहुत प्यारा सा सपना पूरा किया था। वो था अपने पेरेंट्स को पहली हवाई यात्रा कराना। वो क्या कराया था आपने? सो बेसिकली जब हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि वी केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो फ्लाइट्स एंड ऑल ये सब नहीं था। बट देन व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेरी यंग, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 18 मैंने शुरू कर दिया था काम करना। और उसके बाद देन आई सेव्ड अप मनी। सब लोग आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि हम जाएंगे, एंड देन आई वेंट, आई टुक माय पेरेंट्स एंड दे वर वेरी स्कैर्ड कि नहीं फ्लाइट में नहीं जाना है, बट मैंने कहा जाना पड़ेगा, लेट्स गो। And they were the happiest that day. They were making videos, they were taking selfies, so that gave me a sense of relief कि yes, कि मैंने कुछ करा है अपनी लाइफ में, to see them happy is I think a very big deal. We'll talk about coming from small town. Yeah. So how does that make an impact on you, and how do you see life now? So I come from a very small village in Punjab, और जब मैं लोगों को बताती थी उसका नाम भी नहीं पता था किसी को। कौन सा है? It's फिरोजपुर। उसके आगे भी एक गांव है हमारा जलालाबाद, जो किसी को पता भी नहीं होता है, like nobody, it's like near the border. Okay. So yeah, वहाँ की लाइफ भी I used to love, like going there in my summer holidays. It's all fresh food, lassi and this and that, makhan and so yeah. But then if you've lived here, you can't live there. It's just a vacation for you. So that's what I look at my cousins now. They're all, going out of India to study and everything. So if I was still there 30 years back, I would have still been in the same village doing whatever the kids were doing. So thank God for my parents that they took this decision to come to Delhi, to get our education here, and, then to get to Delhi University and college and everything. So it's like a full circle. I think wo aaye tabhi, I could probably get into it, because वहाँ पे opportunities ही नहीं थी उस टाइम। तो हम क्या ही करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर ही इतना बड़ा वो है वहाँ पे उस टाइम होता था कि फीमेल वेडिंग फोटोग्राफर तो सोचना भी इम्पॉसिबल था। So yeah, so it's like I said, it's a full circle. They came here, I got to know about these opportunities, and I took it that way, and I think that's why I'm here today. Fantastic. I mean, your story is truly inspirational. Yeah, I'm sure people would. Yeah, I've worked pretty hard. Like I said, we are all from, we were from Punjab. So they're all into, now the kids have gone to Canada only, nobody is here. But otherwise, nobody had gone into this profession. So it's just like, I think that my family was the only one to come here to Delhi. My dad took this decision, years back of coming here. Then we got our education here. All my cousins were still there and we came. So we got our education and everything else. So I think that's what led to where I am today. So it's because of them actually that I was able to do this. Otherwise, I would have been there, like a village in Punjab, staying there. So yeah. But all your cousins are in Canada. Maybe you would have. Now they've gone, na? Ab jaakar. Like their 20s, now they've gone. If I was there 20 or 30 years back, तो मैं वहीं होती आज. It's now that the parents are sending them outside. Going back to the beginning, आपने जब शुरुआत की थी, कब सोचा था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी? सोचा तो कभी कुछ भी नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत कुछ स्पॉन्टेनियस हुआ है। जैसे कि मैंने पढ़ाई ग्राफिक डिजाइनर की करी थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड ग्राफिक्स के साथ साथ आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप विद अ फ्यू मैगजीन्स। तो उस टाइम वो सिचुएशन था कि चलो ग्राफिक्स में जाते हैं, बट मेरा मन नहीं लगा बिकॉज बहुत ही बोरिंग जॉब थी मेरे लिए। फिर मैं आई फोटोग्राफी में, फिर मैंने फैशन फोटोग्राफी करी, स्टूडियो वर्क करा, वो भी मुझे बोरिंग लगा कि नहीं, मुझे एक जगह नहीं बैठना है। देन आई गॉट इनटू वेडिंग्स। उसमें फिर मुझे मजा आने लगा बिकॉज उसमें इतना ट्रैवल होता था और अब इतने नए लोगों को मिल रहे हो, नए तरीके की वेडिंग्स देख रहे हो, हर जगह ट्रैवल कर रहे हो, न्यू ट्रेडिशंस देख रहे हो, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड करा। तो ये वेडिंग फोटोग्राफी का काम कब कर रही थी आप? ये जब फैशन में मैं थी, मैंने काफी काम कर लिया था, बट देन आई गॉट बोर्ड, क्योंकि एक ही जगह बैठ के व्हाइट बैकग्राउंड के आगे कितना काम करोगे आप। So then there were 5 people. जो मेरी first wedding थी, this bride Saiba, I am still very thankful to her. I remember I told her that I want to do your wedding,
एंड शी हैप्पीली सेड यस. उस टाइम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट देन आई हैड माई टीम जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे. सो मैंने वो आई गॉट टीम मेंबर्स जिनको काफी एक्सपीरियंस था, जिनको काम करना आता था. वहां से मैंने सीखा. देन आई गॉट और लोगों के रेफरेंस से और काम करा. दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड इट्स बीन वंडरफुल टिल नाउ. तो वेडिंग फोटोग्राफी आपने कब तक कंटिन्यू किया? अभी भी है, अभी भी अच्छा. हम वेडिंग्स करते हैं जस्ट बिकॉज मैं खुद मेरे को एक बैक इंजरी हुई थी कुछ साल पहले, तो अब मैंने खुद कैमरा पकड़ना छोड़ दिया है. अदरवाइज आई यूज्ड टू बी द हेड फोटोग्राफर ऑफ माय टीम, लीडिंग द एंटायर टीम. अभी भी हम वेडिंग्स करते हैं. सो आई गो, आई मीट माय क्लाइंट्स, आई मीट द ब्राइड एंड ग्रूम एंड आई एम देयर, बट आई डोंट क्लिक माई सेल्फ एनीमोर. बट देन yes, we are still doing weddings. So where did you learn photography? So a lot of people ask me, I have never learned photography from anywhere and neither have I learned makeup anywhere. ये सब मुझे क्योंकि खुद का ही इतना शौक था, इसलिए कभी YouTube वीडियोस, कभी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस देख देख कर ही जो शौक था, बस उसी के थ्रू मैंने अपने आप ही सीखा था. No professional course for anything. Okay. And how did you stumble into Instagram? Instagram happened, it's been almost I think 8-9 years that Instagram पे मैं हूँ. पर तब Instagram अलग होता था. It was a way to get connected to people. But अब Instagram बहुत अलग है. लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं. So are you also earning? Of course. So what you got? बहुत सारा पैसा. बट बहुत मेहनत भी लगती है इसमें, बिकॉज आपके जैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो काम कर रहे हैं. सो व्हाट मेक्स योर वर्क डिफरेंट, आपकी ऑडियंस कैसे आपसे कनेक्ट करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप क्या कंटेंट जनरेट कर रहे हो, आपकी ऑडियंस आपको क्यों फॉलो कर रही है, या आपको न्यू फॉलोअर्स क्यों आ रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में सीखा है. पहले मैं सिर्फ वेडिंग्स का काम डालती थी या ये सब डालती थी, एंड द ग्रोथ वॉज वेरी वेरी स्लो. अभी टचवुड रिसेंटली मैंने कुछ हैक वीडियोस डालने स्टार्ट करे हैं. सो वेयर आई टीच अबाउट फोटोग्राफी और कुछ हैक्स बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. या सो दैट इज डूइंग प्रिटी वेल. सो या यू हैव टू नो योर ऑडियंस कि उनको क्या चाहिए. फ्री का ज्ञान सबको चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास तो है इतना एक्सपीरियंस, सो व्हाई नॉट शेयर. सो दिस इज डूइंग प्रिटी वेल फॉर मी ऑन इंस्टा. सो हाउ इज योर डे लाइक? सुबह से उठकर कितना, जो बोलेंगे कि ना कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इज इट. सी टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि आई डोंट हैव अ 9 to 5. तो मेरा संडे भी मंडे और मंडे भी ट्यूसडे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे. काम है तो संडे को भी काम होगा, काम नहीं है तो मंडे टू थर्सडे भी आप फ्री हो. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ आई लाइक इज दैट मैं कभी भी छुट्टी ले सकती हूँ अपने काम से. मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ. So that's what I like. But yes, बहुत बार होता है ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपको कुछ डिलीवर करना है. अभी रिसेंटली हुआ था, my son fell sick and मुझे कुछ डिलीवर करना था जो नहीं हो पाया, तो मैंने पूरा अपना फोन छोड़ दिया 3 दिन कि I'm not doing any work. But then I still feel it's easier because मैं अपने आप के लिए काम कर रही हूँ. मैं किसी और के लिए अपना हार्ड वर्क नहीं कर रही हूँ कि कोई और सक्सेसफुल होगा. तो जितना मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ. So I am touchwood blessed and happy with what I'm doing in life. How easy or difficult is it, एक mother का role और एक entrepreneur who's actually dealing with so many things? Yeah. कि you're doing photography also, you're doing makeup and Instagram, of course, like you said, it needs consistency. So even if you're doing nothing, you have to be there making content and posting it. So how do you balance that? So I feel I've balanced it. I don't know, but it is difficult because pehle life was different. Now you have a constant responsibility on you. No matter you have I have a very supportive family, husband, and we are blessed to have nannies around who take care. But then yes, giving your own time is very important. And like I said कि because मेरा खुद का business है तो मुझे सुबह उठ के job पे नहीं जाना है. मैं सुबह उठ के उसके साथ chill कर सकती हूँ. We spend a lot of time. We take him out. We take him to trips also जब भी हम travel करते हैं. So जितना हम टाइम दे पाते हैं उतना देते हैं. और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतनी पार्टी कैसे करते हो, and I tell them that we leave when he sleeps. That's how it is. So yeah, balancing is very important, of course, because I always used to say this when I was pregnant कि मैंने 10 साल काम करा है अपनी लाइफ में आज यहाँ पहुँचने के लिए, तो I am not going to leave it. But again, I am not going to let that affect my child कि ऐसा नहीं कि मैं काम में ही लगी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. So balance आराम से हो जाता है. You have a supportive family, supportive husband, so I think it's all sorted.
Okay. Usually people say women are not very good with business, and you've ये तो बहुत clearly broken the कि भाई क्या बकवास है. So how does it feel? Has anybody ever said this to you? on your Yeah, face? yeah, on my face. Like when I started, एक तो मेरा career भी ऐसा था कि बहुत photographers थी. I was actually India's one of very few rare female wedding photographers. आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो when I used to मतलब मैंने इतना काम शुरू में तो बहुत था कि आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं भी कर सकती हूँ, एंड देन आई हैड टू शो देम कि देखो मेरी 25 लोगों की टीम है एंड दिस एंड दैट. Still there were parents who never understood that I could take this responsibility. तो बहुत rejections मिले हैं, but then like I said I never gave up. I'm like चलो ये नहीं समझ रहा कोई और तो समझेगा. So I had people who were वो उल्टा बोलते थे कि अरे वाह you're a girl and you're doing it. Rather than saying कि आप तो लड़की हो आप नहीं कर पाओगे, वो opposite बोलते थे. So there are people, all sorts of people that you meet, but again like I said patience बहुत जरूरी है किसी भी business में, किसी भी चीज में जो भी आपको करना है, कि patient रहो. If you really want it to happen, it's going to happen. So what was your plus point as a woman photographer? I could connect with the brides, right? And being a female, I knew. I still know what shots. अब मेरे टीम जो है, they've been working with me since almost 10 साल से काम कर रहे हैं, so उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए. That is how we maintain, what I used to do. So being a female, I connect to the bride, and then of course they were also very comfortable with us, and then you understand that thing like what a woman wants on her wedding day, right? So that is the thing that I connect to my clients, and then of course because weddings are very special, and बहुत लोगों के मतलब maximum तो एक ही बार होती है सबकी, right? So we try to make it special for them. That's what we do. We have a super experienced team जिन्होंने अपनी families में भी wedding photography देखी है 30-30 साल से. वो लोग उनके parents भी इसी business में थे. That's how my team is. So yeah, that is one plus point that we and I take very limited weddings. ऐसा नहीं है कि 10 weddings हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं है client कौन है. We take maximum 2 weddings in a day so that I can juggle in both the weddings, and then I can get to know the client and all of that. So yeah. पिछले 10 सालों में how has the wedding photography scene changed, and how have the weddings changed? See, पहले और अभी में बहुत difference है because it's been 10 years that I've been doing this. पहले में अभी जो लोग चार्ज करते हैं फोटोग्राफी का, उतने में उस टाइम पूरी शादी हो जाती थी. अब ऐसा भी नहीं होता. हाँ, that's the trend I've seen because we've done all sorts of weddings. मतलब from a destination wedding in Goa जहाँ पे बहुत सारे events हैं and celebrity artists हैं, to very small pahadi weddings in Uttarakhand. So we've seen all sorts of weddings, and we never like to say no. We always work according to their budgets. जरूरी नहीं है कि अगर हम गोवा wedding कर रहे हैं तो we will not do these weddings because it's about making it special for them. So we've done all sorts of weddings, but yes, the trend has changed. अब लोगों को शादी से ज्यादा वायरल होने का शौक है कि शादी तो चलो हो जाएगी, मुझे ये करना है, ये वायरल होना है, ये करना है. And I tell them कि आप सोच के ऐसी कोई चीज नहीं होता कि वायरल हो जाएगी. It just happens. जैसे हमारा भी बहुत content, wedding content है. There was this bride who got very very viral. In fact, if you talk about my wedding, I had never planned it, but I was like a very viral bride because बहुत सारे shots जो थे मैंने खुद लिए थे अपनी wedding में, as in like my lehenga shots and all of that जो beginning में थे, so that went viral. Pre-wedding भी मेरा same था. I took a lot of shots, putting the camera on a tripod and doing it. We did it in Goa. So it just happens. But then आजकल वही है कि सोशल मीडिया का इतना ज्यादा क्रेज है कि जो एसेंस एक्चुअली फोटोग्राफी का होता है वो थोड़ा सा लूज हो गया है. But then again, that's our job, to maintain it. So we try to do that. Okay. And what are the trends that you think you can predict? Trends, see, everybody wants to get viral. So, they are hiring makeup artists, they are hiring photographers, they are buying from designers jinke already itne followers hain. So it's just become a thing that they want to become viral. But then there are a lot of other people also who are quite private in their lives and they don't want to be a part of this and all of that. But yeah, trends, what I see is, brides are doing a lot of things, like they are dancing, वो अपनी बारात भी लेकर आ रहे हैं, बहुत चीजें मैंने देखी हैं. And अभी हमने एक shoot करा था, it was maternity shoot which we did underwater. Okay. And I was very surprised that she wanted to do it. She had twins. She was pregnant with twins and she was, like swimming like a mermaid, and it was like one of our best shoots that we did recently.
So yeah, trends keep on happening with time, you know. वो तो आजकल है, कुछ और है. So you really, I don't think anyone can predict trends. They just happen. As a photographer, what was your oh wow such a sweet moment? कोई wedding, कोई moment that really touched your heart? So there have been a lot of weddings और बहुत सारे clients हैं जिनसे मेरी आज तक भी बात होती है. My first bride, like I said, Saiba, I still talk to her. And there are times कि बहुत जैसे बहुत parents होते हैं, you know, they like बेटा बैठ जाओ, खा लो, ये कर लो. हमारे there was this one wedding where, you know, towards the end of the function, the entire family sits on a big table. So they specially called my team member ki send Priyanka and she will sit with us and eat. And I was like, no, this is your family. And she's like, no, you have to sit with us and eat. So there are a lot of things like that, you know, when you connect to parents and when you connect to the couples because you're shooting their wedding, which is so important for them. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं when, you know, you connect to the client and you feel good about it that, you know, they're giving you so much respect. Any case where you remember, अरे यार ये कहाँ फंस गए वाला? ये भी बहुत है एक्चुअली में. So there was this one wedding जो हमने करा था. We had shot her sister's wedding also, by the way. Okay. उसकी बड़ी बहन की हमने शादी करी थी. फिर छोटी की जब शादी आई, so we did it. And because they were very nice to me and it was an out of station wedding, so they just paid probably some amount and they said we'll give it to you. And सब कुछ हो गया, सारी wedding हो गई. We traveled, we came back and they never paid. And they started saying things like कि पैसे खत्म हो गए. I'm like, पैसे खत्म हो? You paid all your vendors, you know, you can't say कि पैसे खत्म हो गए. And then I'm seeing them on Facebook going for holidays and this and that. I don't know. So ऐसे और भी हैं, काफी हुए हैं. एक बार और किसी wedding में हुआ था. We were shooting a wedding in Ghaziabad, so it was a good wedding, and I just went for 5 minutes because Barat and everything was super late. So there was this drunk guy who was the groom's friend. I don't know वो कहाँ से आया था, क्या हुआ था, and he had a gun and he shot. So और मेरे contract में होता है that if something like this happens, we pack up and we leave. We are not shooting. And I was standing and just right at the stage talking to my team, and he shot it, and it touched the whatever the gumbat kind of thing, and it right came near my foot, and I was like, I am leaving. Then the bride's sister started yelling in the mic, and that guy was literally thrown out. He was very drunk. So yes, these things happen at Indian weddings. Yeah. Okay. So I think how do you keep the money very clear as an entrepreneur? As we say कि भाई पैसे के हिसाब एकदम clear होना चाहिए. How do you manage that? So सबसे ज़्यादा जो मैंने face किया है ना, being a girl, being a woman, they take us for granted. कि नहीं इतना कर लो, ये कर लो. And I'm like, I'm very clear that if I'm doing it, this is my last offer. Otherwise, I don't take weddings. Like it's my thing. Even I have to pay people, right? But then the clients will bring in their parents कि बेटा ये. So I'm like, you know, please don't do this with me. I have already negotiated with you. And also I've made a point, you know, since touchwood, whatever I have now, I never had when I was a child. So I make sure that if I'm saving, I am also spending on myself. And by spending, I don't mean to buy all these expensive bags or whatever. I like to spend on myself, my family, my child. We go for vacations, and you know, if I have extra money, I would rather invest in a new lens or in a, like I recently bought a gimbal or new lights or whatever. So that's the kind of investment that I do. I'm not a jewelry or a bag person at all. Yeah. So talking about your middle class upbringing, how was life and how अब कितना चेंज आया लाइफ में? See, life was good, like how other people survive, but जब बड़े होके अब ये सब मिला है तो पता था कि अच्छा ये सब नहीं था हमारे पास, कि ये होता है चीजें, you know. We had a decent house, we had a decent living, everything was fine, but अभी जो है थोड़ा सा लग्जरी में बोल सकते हो उसको, वो कन्वर्ट हो गया है. तो आई थिंक अगर वो मैंने उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, they were my biggest support, like you know, उन्होंने कभी भी मना नहीं करा. I came home one day crying for my job कि you know the boss was abusing me and this and that. So they like छोड़ दो, नहीं हो रहा तो. And then I told them कि अब मैं job नहीं कर सकती हूँ. Now I want to do my own thing. And क्योंकि because I was interning, तो मेरे कुछ clients थे. And they were like, try करो, कोई problem नहीं है, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कोई और job देख लेना. Like we'll see to it. So it was their support always with me. They never said no, because
I remember one day that a woman, my dad was a very conservative person. So, but then he also changed looking at, how much hard work I'm doing और मैं कितना काम करती हूँ. So one day, this woman came to my dad and she said कि आपकी बेटी तो रात को जाती है ना काम करने के लिए. Because weddings रात को होती हैं तो आप अपने बेटे की wedding दिन में कर लो, हम दिन में shoot करने आ जाएंगे. So he said one thing कि डॉक्टर्स भी तो रात को जाते हैं ना काम करने, इवन फीमेल डॉक्टर्स गो राइट, तो वो रिस्पेक्टेबल और ये नहीं है. आई मीन हाउ कैन यू जज दैट. एंड आई रिमेम्बर उस टाइम बहुत आर्टिकल्स भी आने शुरू हो गए थे. सो ही यूज्ड टू सेव अप ऑल दोज आर्टिकल्स एंड शो टू पीपल एंड कि देखो मेरी बेटी की फोटो आई है एंड दिस एंड दैट. So yeah, that completely changed the mindset of my parents, and yeah, so that really helped because they understood what I wanted to do. So yeah. So Priyanka, what makes you feel accomplished in life? कि हाँ अब कुछ accomplish मैंने कर लिया लाइफ में. जब मुझे लोग पहचानते हैं ना, जब मैं कहीं जाती हूँ, that sense of happiness is so amazing. Like I would randomly bump into people at a mall, maybe wherever, that, oh, hi, Priyanka, we follow you, we look at your stories and we want to take a picture with you. This actually happened at Goa trip that I was telling you about. It was the most random trip. और उस टाइम तो इतने followers भी नहीं थे, मतलब जो ये अब trend चल रहा है, ये सब नहीं था. So we were at Baga Beach. We were just taking a stroll, me and my parents, and there was this couple, and he was in the army. She was an army wife. So she came to me and she was like, "You are Priyanka, na? I saw you were in Goa and I was hoping कि आप मुझे मिल जाओ." So then my parents, that was a sense of happiness ki, thank God for what she's doing now, and people recognize her and they come and talk to me, and I'm always very nice to them because I've literally earned this working almost since 15 years. So I'm very happy when people recognize me wherever I go. So yeah. And what would be your message to somebody who's probably beginning their career? See, beginnings are always difficult, and अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो तो वो तो और भी difficult होता है. जैसे मेरी पूरे खानदान में किसी ने ये प्रोफेशन नहीं चूज किया होगा, and now into influencing also. So basically, like I say, बहुत patience, जो मैं सबको बोलती हूँ कि बहुत patience चाहिए. Overnight कुछ भी नहीं होता है, and dedication and hard work. You can't work for 2 days and then sit for 5 days कि मन नहीं है या नहीं हो रहा है. You have to be on your toes every day to see what's happening, to see the trends, to give out information and to do all the hard work. And like I said, patience is the key, and hard work, of course, is very important, and never giving up. There are going to be very difficult days also that you will see, but you have to think कि आप manifest कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए. So manifesting is very important. कि आप जिस बारे में सोच ही नहीं रहे हो आपको मिलेगा ही नहीं. You have to think about it every day कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, and that actually happens. So yeah, most important, patience, hard work, and then rest is all there for you. And where do you want to go from here? Anything else you thought? ये जितना भी मेरी लाइफ में हुआ इतना सरप्राइजिंगली हुआ है कि पता नहीं अब कल मैं क्या कर रही हूँगी. I might get into something else also. So yeah, photography, graphic design happened, photography happened, makeup happened, influencing, now this cafe. So let's talk a little more about this cafe. What's happening here? So इसके पीछे क्या thought थी? This was also very random. We got to know, we were sitting in this nearest cafe, and we got to know that this place is available. So we were like, let's do it. And me and my husband Suraj, she was like, okay, fine, let's do it. And then we just took it, and then we made it in almost 1.5 months. And yeah, our food is amazing. Okay. Yes. So 3 things we should try here. Okay, so here, if you are a non-vegetarian, then an Afghani chicken tikka is amazing. We have amazing chefs that we've got. Then our spring rolls are really nice. Our Chinese is really good. Okay. And then from vegetarian, I think I prefer vegetarian. So my favorite. Oh, we have great soups also, by the way. Okay. And chicken tikka, spring roll, and Afghani chicken tikka. Yeah, I think so. Yeah, that's good. So yeah. And vegetarian. Vegetarian, I love vegetarian spring rolls here, and I love pasta, and I love paneer tikka here. Okay. So after having such amazing food at your own cafe,
जब आप कहीं और जाते हो, डू यू कंपेयर, यार हमारे वाले में ये अच्छा है, इनका तो ऐसा है? Does it happen? Yeah, of course. In fact, जब यहाँ पे हम tastings भी कर रहे थे, so many chefs came and we were tasting everything. So we were comparing a lot of things. बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं when you get into a business. Right. Back end work कैसे होता है, कौन सी चटनी में क्या जाता है, I don't know all of that because I don't know how to cook. But then my husband is like a cooking fan. Okay. So he knows a lot of things. कि इसमें क्या, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है. So yeah, we've put in a lot of hard work here also, and touch wood, it's doing pretty well. So three tips for anybody who wants to be an Instagram influencer. First of all is patience. अगर आप सोच रहे हो कि आपके 1 महीने में 2 महीने में से लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे या 50,000 भी हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा. आपके कितने महीने में कितने फॉलोअर्स हुए? जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले ग्रोथ थी बहुत कम थी बिकॉज इतना कंटेंट नहीं था, लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, इतना शेयरेबल कंटेंट नहीं था. So अभी recently last month में I think 1 महीने में I gained almost 34,000 followers. Wow. Yeah, through these reels. So I keep on checking my this thing on Instagram. So yeah, so first is patience, जो कि मैंने भी नहीं lose किया इतने सालों तक. Then second is consistency, जो कि बहुत important है. आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपका मूड खराब है या नहीं करना है या ये करना है या वो नहीं करना है, आपको करना ही पड़ेगा. जब तक आप अपना हार्ड वर्क नहीं डालोगे, तब तक वो एवरीडे नहीं करोगे, उसको एज अ जॉब नहीं लोगे, तब तक यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. एंड थर्ड आई वुड से कि एक जॉनर होना चाहिए आपके पास इंस्टाग्राम पे, कि आप क्या, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मेकअप के टिप्स दे रहे हो, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप फोटोग्राफी टिप्स दे रहे हो. आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को सीखने के लिए आपके पास है. सो आपका जॉनर क्या है और आपकी ऑडियंस क्या है, that is very important. ये नहीं कि आप कुछ भी डांसिंग वीडियोस बना दो, चलती वो भी हैं, बट मुझे वो कभी भी नहीं करना था अपनी लाइफ में कि मैं डांसिंग वीडियोस बना रही हूँ और ये सब करके मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं. नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी नोन फॉर माय कंटेंट, एंड टच वुड दैट्स हैपनिंग. सो आई थिंक दिस इज द एडवाइस दैट आई वुड गिव. And Priyanka, any message that you would like to give to people? So life has given me such good surprises, and I am super thankful for it, for what I've done in my life, and thank God for that. I took this decision of leaving that one job that I had to and starting my own thing. And I feel you can always get what you want in life if you work super hard for it. It's not just by sitting at home and just thinking about it. You have to act on that. And now I've gotten into so many different professions. I don't know what I'm going to do tomorrow, but just one message to everyone, that never ever give up on what you've manifested for yourself, because if you truly work for it, you will definitely achieve that. Thank you so much.